Class 10 Science, Chapter Magnetic Effects of Electric Current. Now we will see magnetism in medicine. So, in medicine also magnetism is for our use and for our cure and diagnosis. It is done by magnetic resonance imaging. अब मशीन चला लीजिए that is MRI. What is MRI technique? We know that in our body electrical impulses are produced. How it is produced? Because earth is negatively charged and our body is in contact with the earth, so our body is also negatively charged, and these negative charge when flow through circulation of blood, then as charge flows, so the magnetic field lines are created. So our body is negatively charged as earth is negatively charged. So our body is negatively charged. Even our nerves, while transferring various information, produces impulse. That is again charged impulses. So that is a minute electric current. It is an electric current of the order of 10 to the power minus 6 ampere. So negatively charged. When these charges circulates through blood, these charges circulate through blood, then it produces an electric current of the order of microampere, that is 10 to the power minus 6 ampere. Even when nerve transports various information to brain, that is whatever nerves are there, so nerves transport information through brain, then it is in the form of electrical impulse. And electric impulse means electric current, that is electric current, and it is also of this order only. This current produces magnetic field. These magnetic field lines are taken as image on monitor of computer. So these magnetic field
lines are mapped, इमेज बनाई जाती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसकी मैपिंग की जाती है. सो दीज magnetic field lines are mapped in monitor of computer, primarily of brain and heart, because most of the blood is in brain and most of the impulses, most of the blood is in heart and most of the impulses are in brain, because there are millions and millions of nerves present in brain. So हमारी बॉडी में जितने नर्व्स नहीं हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन में ही हैं. सो इसलिए ब्रेन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो नर्वस इम्पल्स से होती है, और जो हार्ट में होती है वो ब्लड के सर्कुलेशन से होती है. सो मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर प्राइमरीली फॉर हार्ट एंड ब्रेन. For heart and brain, and if any disorder is there, then it is treated later on this basis, and by its diagnosis the scientist can find the disorders. या फार्मासिस्ट जो भी होगा या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, दैट दे कैन फाइंड डिसऑर्डर. So this is called magnetic resonance imaging. जिसके लिए हम 10,000 से 20,000 के बीच पैसा रुपया देते हैं. सो इट इज़ MRI ओनली. Now let us understand it in a better way. Magnetic resonance imaging, commonly known as MRI, helps doctors find, watch, and treat medical problems. MRI uses very strong magnets, radio waves, and a computer to make pictures of the inside of the body. MRI pictures are more detailed than those made with other methods. There are many reasons to have MRI. So these are pictures of brain, there are whatever many are reasons shown to have here. MRI. MRI may find bleeding, such as bleeding in the brain. Brain changes, as in stroke. Problems with your back, such as a herniated disc, and an injury inside the body, such as a torn anterior cruciate ligament. Before MRI, you will remove all metal objects. And it's not safe to have MRI with some medical implants. You should tell the MRI technologist about any metal, device, or implant you may have in your body, such as a pacemaker. To prepare for MRI, you will lie on a table just outside the scanner. MRI scanners are very noisy, so you will probably wear earplugs or headphones. Different equipment, such as pillows and straps, will help you stay in the correct position. Once you are ready, the table will slide into the scanner. Most often, closed scanners, such as this one, are used. The area inside is very narrow. In some areas, open scanners are available. This scanner is open on the sides, so you won't be completely surrounded by the machine. However, the pictures may not be as good as with closed scanners.
For either type of scanner, a technologist will operate it from the next room. You will be able to talk to each other through a two-way speaker. During the scan, magnets in the machine will create a strong magnetic field. This will not harm you. Then, the scanner will send radio waves through your body. This will not harm you. When the radio waves are turned off, the scanner will pick up energy signals from your body. These signals are used to make the pictures. During the scan, you will have to stay very still so the images will be clear. You may be asked to hold your breath for a short time. MRIs may take 30 to 45 minutes or longer to complete. In some cases, you may get contrast dye with your MRI. The dye helps make clearer pictures. So this is the procedure for MRI, and various defects occurring in our body can be compared and diagnosed through MRI, and later on they can be treated. Now let us start the working of electric motor. Electric motor is a rotating device which converts electric energy to mechanical energy. That means when electricity is fed through electric motor, आप चाहे मेन सप्लाई लाइन से 220 वोल्ट करें, या अगर टाइनी इलेक्ट्रिक मोटर है तो 12 वोल्ट से चल जाएगी, कुछ 9 वोल्ट से भी चल जाती है। तो बहुत छोटी टॉयस की इलेक्ट्रिक मोटर है वो 9 वोल्ट से भी चल जाती है। तो कुछ भी हो, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फेड किया जाता है एंड उसके बाद वो मोटर रोटेट करने लगती है। जैसे फैन है तो फैन रोटेट कर रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर है, तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आप चाहें तो उसी मोटर से पानी को ऊपर चढ़ा सकते हैं, सो लिफ्टिंग वाटर। सो इस केस में वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वाटर को आप हाई लेवल पर ऊपर टैंक में चढ़ाते हो तो उसमें mgh की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो आप किसी न किसी फॉर्म में, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो या रोटेशनल, कई जगह इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करती है तो जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं तो वो आगे बढ़ती हैं। तो इस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन होता है। लीनियर मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फेड करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें जाती है और उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये रोटेटरी डिवाइस है, रोटेटिंग डिवाइस। इन आवर डेली लाइफ इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड इन वेरियस एप्लियंसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर जनरली ऐसी होती है जो वाटर सम्प की तरह काम करती है, तो ऊपर पंपिंग करेगी। इन washing machine, mixer, grinder, and each wheel of this electric car is turned by electric motor। तो इलेक्ट्रिक मोटर ऑटोमोबाइल्स में भी रहती है। सो इट हैज़ वाइड एप्लीकेशंस। ऑलमोस्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैज़ इलेक्ट्रिक मोटर इन वन फॉर्म और अनदर। सो it converts electrical energy into mechanical energy, that is potential energy and kinetic energy, और kinetic energy किसी न किसी फॉर्म में बदल देती है। इलेक्ट्रिक मोटर is used as important component in electric fan, रेफ्रिजरेटर, इन सभी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर is used as important component
in electric fan, washing machine, automobiles, mixer, ग्राइंडर, जो फ्लोर मिल है जहाँ गेहूं पीसा जाता है तो व्हीट का फ्लोर मिल, तो वहाँ पर भी इसका काम आता है. देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस. MP3 प्लेयर, सो MP3 प्लेयर्स में भी इसका यूज़ है. सो दीज आर द वेरियस यूजेस. एंड ये क्या करती है, ये तो इसकी प्राइमरी लाइन है. इट इज़ ए रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये तो आपको लिखना ही है, ये इसका यूजेस है. नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइजेस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ये कैसे काम करती है. ए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अ मोटर works on the principle that when a rectangular coil is placed in magnetic field, that when a rectangular coil is placed in magnetic field, then अगर उसको उसमें when a rectangular coil is placed in magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates is continuously. कभी भी अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो करेगी तो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल रखी हो, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और उसमें करंट फीड कर दो तो उसमें फोर्स लगेगा और उसी फोर्स से वो कॉइल रोटेट करेगी और रोटेशन प्रोड्यूस होगी. उस रोटेशन को आप किसी न किसी काम में ले सकते हो, चाहे ऑटोमोबाइल चलाइए, चाहे मिक्सर चलाइए, चाहे फ़ैन चलाइए, चाहे वॉशिंग मशीन चलाइए, कुछ भी चलाएं तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से हम कई काम कर सकते हैं. सो एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट. ए फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल. ए फोर्स एक्ट्स on the coil which rotates it continuously, which rotates it continuously. Now we will see construction and working. For that first we will make a schematic diagram of electric motor. तो सबसे पहले हम टू फेस लेते हैं मैग्नेट का. वन इज नॉर्थ एंड अदर इज साउथ. सो दिस इज साउथ. नॉर्थ एंड साउथ आपने फेस ले लिया है. एंड इन बिटवीन इट ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड. Now rectangular coil is placed and it is further connected to some commutator, that is split ring. It is split ring. So split ring में ये split ring fixed है और उसमें ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है. That is wire can slip over it. तो ये split ring है.
दिस इज स्प्लिट रिंग, और इसमें अंदर ही अंदर वायर पूरे में मूव कर सकता है, तो ये स्प्लिट रिंग है। इसे कम्यूटेटर भी कहते हैं। तो ये इसको ये चीज़ है, तो स्प्लिट रिंग है। अदरवाइज यू कैन वेल्ड इट, इसको मूव ना कराएं और यहाँ पर एक कार्बन ब्रश लगा दें, तो ये कार्बन ब्रश है। और कार्बन ब्रश को स्प्रिंग लोडेड कर दें, तो ये भी एक डिवाइस है। और इसको एक ट्यूब में इनकेस कर दें ऐसे, तो ये स्प्रिंग लोडेड कार्बन ब्रश है। जैसे जैसे एबट करेगा तो इसके साथ ये कांटेक्ट में बना रहेगा, तो स्प्रिंग लोडेड आपने इसमें लगा दिया ये, और ये कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश का मतलब एक कंडक्टर है, तो ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कंडक्टर। एंड फर्दर दिस इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई। इसी चीज़ को आप एक्सटर्नली किसी सोर्स से, डीसी सोर्स से, हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, सो इट इज़ नाउ कनेक्टेड टू सम डीसी सोर्स, सेल से आप कनेक्ट कर लें। एंड now this is a schematic diagram of electric motor. When current is fed through the rectangular coil A, B, C, D, so it moves from positive terminal through this contact carbon brush. So these are two carbon brushes. That is spring loaded. ये पुश किए जा सकते हैं, पुश बैक हो जाएंगे। एंड दिस सेटअप इज नोन एज स्प्लिट रिंग, दैट इज कम्यूटेटर। सो इसको कम्यूटेटर कहेंगे। स्प्लिट है, बीच में रिंग है, ऐसी रिंग है जो बीच में ब्रेक है, सो स्प्लिट रिंग। नाउ आफ्टर दैट the current through it is in contact, और फिर इस रिंग से कांटेक्ट में, तो यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलने के बाद ये इसमें आ जाएगी, और यहाँ से होती हुई ये ऐसे जाएगी, और फिर ऐसे जाएगी, और फिर इसमें ऐसे जाएगी ऐसे, और फिर इसमें होते हुए फिर यहाँ से एंटर कर जाएगी नेगेटिव टर्मिनल पर। सो इससे होती हुई, फिर एक कार्बन ब्रश से होती हुई, फिर यहाँ से जाएगी और ऐसे आ जाएगी। ABCD is rectangular coil. Now the magnetic field is from north to south. North से निकलती है और साउथ में जाती है। So ऐसे ये फील्ड जा रही है। अब देखिए कि हमारे जो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इसे I मानते हैं, इसको B मानते हैं, and this is force, so ये force हो गया। now अब इसमें I को I के डायरेक्शन में रखो, B को B की डायरेक्शन में रखो। देखिए this is B, तो फील्ड लाइंस इधर है तो इधर की ओर रख दिया, और I को I के डायरेक्शन में, तो फोर्स देखिए नीचे लग रहा है। तो ये जो AB कंडक्टर है, AB कंडक्टर में क्या हो रहा है, AB कंडक्टर में मैंने जो I है उसको I की डायरेक्शन में लॉक कर लिया। B इधर है, B इस साइड है, आप देख लें यहाँ नॉर्थ से साउथ जा रहा है, B इधर है और I उधर है। तो थंब की पोजीशन देखें, थंब डाउनवर्ड है, तो इसलिए इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। दिस इज फोर्स एंड दिस कंप्लीट सिस्टम इज ऑन द एक्सेल। तो इसमें एक रोटेटरी एक्सेल है, तो उसमें ये पूरा सिस्टम रोटेट कर सकता है। तो कुछ ना कुछ एक एक्सेल होनी चाहिए जिस पर कोई ये रोटेट कर सके। सो स्प्लिट रिंग से होता हुआ एक एक्सेल है। तो अब इस पर फोर्स है, तो ये चीज़ अब नीचे जाएगी, नीचे, क्योंकि
ये रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये नीचे जाएगी, ये वाली नीचे फोर्स लग रहा है, द फोर्स इज डाउनवर्ड. नाउ लेट अस इंस्पेक्ट अबाउट दिस. हियर द करंट इज लाइक दिस एंड करंट नीचे आ रही है, और फील्ड देखिए, फील्ड इधर है, बी देख लो आप, तो फोर्स अपवर्ड है. सो आई, बी और एफ. तो ये जो सी डी क्वाइल है इसमें करंट डाउनवर्ड है, ये करंट है, करंट डाउनवर्ड, फील्ड इधर ही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, एंड द फोर्स इज अपवर्ड. तो इस वाली क्वाइल में फोर्स अपवर्ड है. नाउ तो इसमें अपवर्ड बना लें. तो इसी क्वाइल में हमने देख लिया कि जो भी रेक्टेंगुलर क्वाइल है और फील्ड है, रेक्टेंगुलर क्वाइल है और फील्ड है, तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन कर ली. अब इसी क्वाइल में मान लीजिए पेन है और एक तरफ पेन में नीचे फोर्स लगे, ये देखिए पेन में नीचे फोर्स लगे और दूसरी तरफ से ऊपर लगे, तो वो उसे रोटेट कर देगा. तो इस पर नीचे फोर्स लगाइए और साथ में इस पर ऊपर फोर्स लगाइए तो रोटेट कर देगा. सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन में काम करें तब तो बैलेंस फोर्स हो जाएंगे और वो जीरो हो जाएगा. लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक इधर काम करे और दूसरा इधर, तो उनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं. दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो दे प्रोड्यूस टॉर्क. इसको ये इधर रोटेट कराना चाहेगा और इसको ये इधर रोटेट कराना चाहेगा, एंड अबाउट दिस एक्सिस जो उसका मिड पॉइंट है. तो वही चीज़ यहाँ हो रही है. ये जो पूरी रेक्टेंगुलर क्वाइल है ये अब ऐसे रोटेट कर जाएगी क्योंकि ये डाउनवर्ड जाएगा और ये अपवर्ड जाएगा, तो इससे ये रोटेट करने लगेगी. तो अब हम देखेंगे, पहले देखेंगे हाफ टर्न में क्या हो रहा है, और हाफ टर्न के बाद अब ये जो सी डी क्वाइल है ये इधर आ जाएगी और ए भी उधर चली जाएगी 180 डिग्री रोटेशन के बाद. तो तब क्या होगा ये भी अब देखेंगे. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. So electric motor consists of two permanent magnets. Whose opposite poles are phased to each other. Between the gap of magnet, a rectangular coil of many turns. Between the gap of magnet, a rectangular coil of many turns wrapped on axle. ये किसी चीज़ पर रैप्ड होती है, तो वो कोई आयरन एक्सल होगा या किसी पर जो रोटेट कर सके. रैप्ड ऑन एक्सल, किसी एक्सल पर रैप्ड होगी. इज प्लेस्ड विच कैन फ्रीली रोटेट्स. लाइक अगर आप ऐसे एक्सल ले लें तो दिस इज एक्सल, और इस एक्सल पर दिस इज एक्सल. सो इसकी थिकनेस पर ही, ये जो थिकनेस दिख रही है इस पर, थिकनेस पे सरेशंस बने होते हैं और इसी पर कॉइल ऐसे रैप्ड हो गई मैनी टर्न्स.
और फिर एक टर्न ऐसे आ जाएगा और इसका एक टर्न ऐसे आ जाएगा. सो 2 टर्न्स विल बी लाइक दिस. एंड 1 टर्न जो भी होगा दैट इज वेल्डेड ऑन कम्यूटेटर. यहाँ का भी जो एक टर्न आएगा वो इस पर वेल्ड हो जाएगा और ये एक टर्न इस पर वेल्ड हो जाएगा. दिस इज फ्री एंड. तो ये जो पूरा हमने देखा ये एक स्लैब है एक्सेल. तो ये अगर इसको हमने फील्ड में रख दिया, नाउ इफ इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, so now place it in magnetic field. This is north, this is south, and now magnetic field is like this. ऐसे कर दिया. और यहाँ पर कार्बन ब्रश हैं जो कि स्प्रिंग लोडेड हैं. This is carbon brush which is spring loaded, and further they are connected to some source of potential difference. ऐसे कर दिया. तो यहाँ पर ये एक्सल है, इस पर ये रोटेट है. तो अगर इस पर करंट फेड की जाएगी तो इन सभी वायर्स में करंट ऐसे जाएगी. एंड नाउ between the gap of rectangular coil, many turns of insulated copper wire wrapped on axle is placed. So a rectangular coil of consisting of many turns wrapped on axle is placed. Ends of coil are connected to secured to commutator. जो फ्री एंड्स हैं, ends of coil is secured to commutator, that is split ring, which also can rotate on axle. जो इसके बीच में एक्सेल है उस पर ये रोटेट कर सकता है. अदरवाइज इट कैन रोटेट अलोंग विद एक्सेल, विच ऑल्सो रोटेट्स अलोंग विद एक्सेल. Rectangular coil commutator along with axle is called armature. Whatever things are rotating is called armature. Rectangular coil, split ring and axle combinedly called armature. Split ring is in contact with spring loaded brushes B1 and B2. So two semicircle of split ring, two semicircles of split ring is in contact with spring loaded carbon brushes B1 and B2. So this is construction. B1 and B2 ends are connected to some source of potential difference. B1 and B2 are connected to some source of potential difference
This is construction. And when current is fed through armature, armature rotates. Now we will see working of electric motor. First we will see working of electric motor through video, and after that we will write it. Now we will learn construction and working of electric motor. Sweating very hard. So the moment you switch on the fan, it start rotating. So have you ever wondered that what happens when you open the switch? Why does the fan rotate? Now you can say that it has a motor inside that makes it rotate. But what is going inside the motor that makes the fan rotate that way? So in this video, we'll try to answer all these questions regarding that how does a motor works and how it is made. Now in a previous video in kicking wire experiment, we had seen that when a conductor was placed in a magnetic field, it experienced a force when current was switched on. Now this was a linear movement, right? The conductor was pushed either forward or in backward direction. It wasn't a rotatory movement. So we know that when a conductor is placed in a magnetic field and current is switched on, then it experiences a force in certain direction. Now we have to make an arrangement which enables us to get a rotatory movement by this conductor. Now let's make an arrangement which give us rotatory movement due to the force on this conductor. So let's take a magnet whose north pole is here and south pole is there, and this type of magnet is taken to ensure that we get a uniform magnetic field between these magnets. So now let's place a rectangular conductor inside this magnet. Now if you observe that if I switch on the battery, what will happen on this conductor? This conductor will experience a force that we can calculate by using Fleming left-hand rule or. Now this end is positive and this end is negative. So current is moving like this and the magnetic field is from north to south. Father, mother, child rule. So let's try to switch on the battery and flow the current inside this conductor, and let's try to find out the direction of force on this whole rectangular conductor. So now if you observe that when I switched on the battery, the current is flowing in the AB arm in inverse direction, and in CD arm it is coming out of the plane. So let's apply father, mother, child rule on the arm AB and arm CD. Now for that we have to stretch a left hand. Remember, you have to stretch your left hand, thumb, forefinger and second finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Now we know that this is father, then comes mother, then comes child. So we have to place forefinger in the direction of magnetic field. Now magnetic field is always from north to south direction. So this will be the magnetic field, and you have to place the second finger in the direction of current. So current is pointing inwards, so you have to place this way. So you will find out that force on the conductor will be upwards. So in this wire wire, in upward direction. it is Now in let's upward try to direction. find C out arrow is the given. force on CD arm. Now in CD arm, current is pointing in outward direction. Magnetic field is in the same direction, so this will be the case. This is magnetic field, this is current. So force will be in downward direction. Now if you observe, on AB arm force is in upward direction and on CD arm force is in downward direction. So this force will constitute a couple, and this couple will start rotating the motor. What is couple? That equal and opposite forces, if they are having different line of action,
जैसे कि इसमें यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच आर, इसका अपना लाइन ऑफ एक्शन है, इसका अपना लाइन ऑफ एक्शन है, सो दे आर हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो they constitute a torque, that is rotatory force, so it constitute a torque. So this force will constitute a couple and this couple will start rotating the motor. Now just observe the rotation of the motor and you will find a very interesting thing. Now just observe the force on AB arm is in upward direction and on the CD arm is in downward direction. So the motor will start rotating. Now after this motor has completed half a rotation, just observe that what forces are acting. Now on the CD motor. arm is here, Now, AB arm has gone there. AB arm will be experiencing force in upward direction and CD arm will be experiencing a force in downward direction. So now you will find out that these two forces will try to take back the motor in its original condition. So it will be like that after half a rotation motor is moving in one direction and then after half a rotation it is. So it is not correct. If the polarity is not getting changed, so it will oscillate. Half turn फिर back, तो इस तरह से rotatory motion नहीं हो पाएगा. So what we can do to continue the rotatory motion in one direction, there is a commutator is placed which changes the polarity as soon as CD arm comes towards south. So let us see what is the arrangement made so that it ensures which arm is in south direction towards south, it is having same current. Let us see. Moving back in the opposite direction. So it will be like fan is rotating half a rotation and then going back. So will it work? No, it will not. So what we do, we take split rings here. So what will happen that if we take the split rings, these split rings are connected to positive terminal of the battery for only half rotation. Just see how. Now after half the rotation you will find out that the arm AB gets connected to the negative terminal of the battery. So it will get the current in downward direction and CD arm will get the current in upward direction. So you will find out that the force on the right arm is. See, when it is half turn rotated, then also the split ring is also rotating. See, here first it is like this. So here AB is this. So AB में करंट कैसे फ्लो कर रही है? ये अपवर्ड फ्लो कर रही है उस साइड में, दैट साइड में. और अगर ये रोटेट कर जाएगा तो जब CD आएगा तो CD इसी ब्रश से कांटेक्ट में रहेगा पॉजिटिव से, तो उसमें भी वैसे ही करंट फ्लो करेगी और जो फोर्स लगेगा वो एक ही डायरेक्शन में लगता रहेगा. इसको फिर से माइन्यूटली ऑब्जर्व करें. What will happen that if we take the split rings, these split rings are connected to positive terminal of the battery for only half rotation. Just see how. Now See, now after CD half the and it is rotation, you connected find out to that positive terminal. the arm AB gets connected to the negative terminal of the battery. So it will get the current in downward direction and CD arm will get the current in upward direction. So you will find out that the force on the right arm is always in upward direction and force on the left arm is always in the downward direction. So Because since the half force after direction is half not turns, changing on both the polarity changes and it ensures that current keeps on moving in same direction. जैसे ही ये कम्यूटेटर रोटेट करता है, सो कम्यूटेटर रोटेट करेगा तो जो भी साइड इस तरफ होगी उसमें उस साइड ही करंट फ्लो करेगी और जो इधर होगी उसमें इधर आती हुई होगी, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल है. तो फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट इन सेम डायरेक्शन एज आफ्टर एवरी हाफ टर्न द polarity of current changes and force remains in same direction, so torque always remains in clockwise direction. तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है. arms, so the motor will rotate in only one direction.
So this is how we had converted. Now let us perceive working of electric motor in another way. This conversion of electrical energy to mechanical energy is performed by an electric motor. As you switch on an electric fan, the blades of the fan start moving. This means that electrical energy is converted to mechanical energy. This conversion of electrical energy to mechanical energy is as the direction of the direct current changes. This is The direction commutator. of the rotation of Here the it is armature commutator. also changes. Again, as the key is opened, the armature stops rotating. This Now, is key. let us compare the construction and working of a DC motor to that of a DC generator. A DC motor has an input voltage supply, whereas a DC generator has a load like a bulb connected to the carbon brushes. Besides, in the case of a DC motor, an input direct current causes the rotation of the armature, whereas in the case of a DC generator, the rotation of the armature results in a DC voltage across the load. Now let us go for the working of DC motor. So DC means डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट का मतलब है जिसमें पोलैरिटी पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव रहता है और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल रहता है. जो हमारा सोर्स है, जो सोर्स ऑफ सप्लाई है, हाउस होल्ड सप्लाई, उसमें डायरेक्ट करंट नहीं है. उसमें 50 टाइम्स एवरी टर्मिनल पॉजिटिव और निगेटिव में चेंज होता है और सेकंड टर्मिनल भी पॉजिटिव निगेटिव में. तो उसमें पोलैरिटी चेंज होती रहती है. तो एक सेकंड में 50 टाइम्स से वो चेंज होती है. तो उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या एसी करंट कहते हैं. जबकि सेल में या बैटरी में डायरेक्ट करंट है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव रहता है और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव रहता है. नाउ वी आर सीइंग द वर्किंग ऑफ डीसी motor. What we have seen, it is all DC motor. So in case of DC motor, बाकी इसमें एक्सल होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, किसी न किसी पे रोटेट करेगा, बट वो हम सब बना नहीं रहे हैं. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन फंक्शनिंग ऑफ इट, कि किधर किधर फोर्स लगेगा. तो 2 ब्रश लगा दीजिए, बहुत प्राइमरी आप बना लें, और फिर यहाँ पर एक सेल लगा लें, स्विच. तो बेसिक आप फिगर बना लें, और बेसिक फिगर बनाने के बाद यहाँ पर ये दिस इज एन, दिस इज एस, और इसमें फिर फील्ड नॉर्थ से साउथ होगी. एंड दिस इज स्प्लिट रिंग. स्प्लिट रिंग को आप S1 लिख लें, S2 लिख लें, और जो कार्बन ब्रशेस ब्लैक कलर के हैं उन्हें B1 एंड B2 लिख लें. आर्मेचर को A, B, C, D. अब करंट इसमें ऐसे फेड होगी, तो यहाँ से होते हुए कांटेक्ट बनाते हुए करंट ऐसे जाएगी और फिर यहाँ से वापस आएगी और इसमें चली आएगी. सो इन केस ऑफ फर्स्ट फिगर, so when current is fed to armature, then in AB arm current flows from A to B, A to B, A से B उसमें करंट
फ्लो करती रहेगी तो, और ये फील्ड है. नाउ सी, दिस इज करंट, दिस इज फील्ड एंड दिस इज फोर्स. सो ये जो करंट है उसको करंट की तरफ रखिए, फील्ड को फील्ड की तरफ, और जो फोर्स है वो नीचे है. सो करंट, फील्ड, फोर्स. सो इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा फ्रॉम ए टू बी. एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एज डायरेक्शन ऑफ field is from north to south, that is north pole to south pole. So as per Fleming's left hand rule, AB arm experience a force in downward direction. AB arm experience a force in downward direction. In CD arm में current flows through from C to D. वहाँ कैसे फ्लो कर रही है? That is from C to D. तो C to D अगर करंट फ्लो कर रही है तो करंट को ऐसे कर दें, B ऐसे कर दें. देखिए करंट डाउनवर्ड है, इसी में करंट डाउनवर्ड है आपकी ओर आती हुई, और B उधर है, दिस इज B. सो B उस साइड है तो फोर्स ऊपर है, तो इस पर फोर्स ऊपर लगेगा. आप अपने फिंगर को ओपन करके ये चीज चेक कर सकते हैं. सो एंड फील्ड इज from north pole to south pole, of magnet. So force acting on CD arm is upward. So force acting on CD arm is upward. As these forces are acting on different lines of action, एक इस आर्म में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और इस आर्म में अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इस तरीके से है. सो ये क्या करेगा, इसके अबाउट में इस वायर को रोटेट करा देगा. ये इसका एक्सेल है, सो इसमें ये रोटेट हो जाएगा. सो इस तरीके से रोटेशन होगा. ये चीज़ ऊपर जाएगी और वो चीज़ नीचे आएगी. जैसे फोर्स इस पे डाउन लग रहा हो तो ये नीचे और ये ऊपर, तो इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा. नाउ सो एक्टिंग ऑन CD arm is upward, so it constitutes a couple. What does it mean by couple? Equal and opposite forces. Having different line of action. एक तो होता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम ऐसे खींचें इसको ऐसे, तो इससे कोई टर्क नहीं है. लेकिन अगर एक नीचे जा रहा और एक ऊपर, तो ये रोटेशन है. तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए. हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, जैसे एक में इधर और एक में इधर, तो इसका एक्शन इस डायरेक्शन में और इसका एक्शन इस डायरेक्शन में, तो डिफरेंट लाइंस हैं ऑफ एक्शन. इज कॉल्ड
is constitutes a couple. And it produces rotatory force, जिसको कि टॉर्क कहते हैं. रोटेटरी फोर्स कॉल्ड टॉर्क. तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है. एंड कॉजेस, और उससे क्या होगा, इसकी वजह से जो ये डाउनवर्ड जा रहा है और यहाँ अपवर्ड जा रहा है, तो इसमें ये डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड है, तो एक ऐसे रोटेशन हो जाएगा इस एक्सल पर. यहाँ बीच में एक एक्सल होगी तो उसका रोटेशन हो जाएगा, पूरा आर्मेचर रोटेट कर जाएगा. सो रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी. आफ्टर हाफ टर्न, यानी 180 डिग्री रोटेशन, हाफ रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं. जैसे कि हमने पीछे का केस लिया, तो इसमें यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग है जिसमें ये वेल्डेड है और ये कार्बन ब्रशेस हैं. तो एक बेसिक फिगर आप बना लें. नाउ इट इज बेसिक फिगर एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. यहाँ पर आप मैग्नेट ले सकते हैं, तो नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ एंड साउथ ले लें, बाकी पूरा कर लें. तो यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे बना लिया. अब इसके बाद इसका रोटेशन होगा, क्योंकि हमको इसका फोर्स पता चल गया है कि फोर्स ए बी आर्म में डाउनवर्ड लग रहा है और इसमें ऊपर लग रहा है. और ऐसा क्यों हो रहा है, ये करंट के मोशन की वजह से हो रहा है, करंट और फील्ड की वजह से. तो जब ये रोटेट करेगा, क्योंकि ये ऊपर जाना चाहता है, ये नीचे, तो अब आफ्टर हाफ टर्न इसकी क्या स्थिति होगी. नाउ आफ्टर हाफ टर्न सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, और ये टर्न करके जब ये चीज़ पलट जाएगी तो ए उधर, बी उधर चला जाएगा और ए इधर चला जाएगा. एंड यहाँ पर ये जो अभी S1 और S2 था और ये B1 और B2 था, तो अब S2 इस साइड आ जाएगा और S2 और S1, S2 का कांटेक्ट B1 से बन जाएगा और S1 का कांटेक्ट B2 से बन जाएगा. एंड नाउ इसके बाद ये, तो इसके बाद क्या होगा, जो करंट इसमें फ्लो कर रही थी, इट कंटिन्यू टू फ्लो इन सिमिलर मैनर. ये करंट तो अभी भी जैसे इस जब स्प्लिटिंग इधर आ गई, तो उससे क्या हुआ कि ये दूसरा कड़ा जो है हाफ सेमी सर्कल, इधर वाला जो है वो रोटेट करता हुआ उधर आ गया. ये ऐसे था तो ये रोटेट करता रहा और ये इधर की ओर आ गया, क्योंकि ये चीज़ रोटेट कर गई तो उसका लूप भी इधर आ गया. और अब CD आर्म में फिर से वैसे ही करंट हो गई, क्योंकि ये तो पॉजिटिव से ही चलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल जो भी यहाँ पर आ जाएगा स्प्लिट रिंग, उसमें वैसे ही करंट फ्लो होगी. और इसी तरीके से निगेटिव टर्मिनल ये रिसीव करके सर्किट पूरा कर देगा. तो अभी भी ये चीज़ बदली नहीं है, आर्म जरूर बदल गई है. However, the direction of current is similar, so the force continue to act in the similar manner and torque continue to act in anti-clockwise direction. And the motor continue to rotate in anti-clockwise direction. So after half turn, CD arm replaces AB arm
एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का मतलब अब ए बी सी डी की जगह चली गई, सी डी ए बी की चली गई। नाउ इन सी डी आर्म direction of current is now from D to C. Direction of current is from D to C as S2 end of commutator is in contact with B1 as S2 एंड ऑफ स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग बोलिए या कम्यूटेटर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इज इन कॉन्टैक्ट विद B1 एंड S2 तो ऐसा हो गया, और S1 किसके कांटेक्ट में है, एंड S1 इज इन contact to B2. So in AB arm the direction of current is from B to A. So in AB arm direction of current is from B to A. So इसमें B to A हो गई और इसमें A to B वैसे ही रही जैसे है, क्योंकि स्प्लिट रिंग ने पोलैरिटी चेंज कर दी, ऐसा हो गया। सो द फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट इन सिमिलर मैनर आफ्टर हाफ टर्न। सो फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट इन similar direction after each half turn and torque continue to act anti-clockwise. And motor keeps on rotating in same direction. सो मोटर इस तरीके से सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी। नाउ फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर क्या है? फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू चेंज द पोलैरिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्स कर देता है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ टर्न। पहले सी डी में जाती थी, सी से डी, फिर डी से सी जाने लग गई, तो उल्टी कर दी उसने करंट। आफ्टर ईच हाफ टर्न so that torque यानी रोटेटरी फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट इन सेम डायरेक्शन and motor rotates in same direction.
अब इसी मोटर से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि ये अगर हमने आर्मेचर की वाइंडिंग किसी पे ले ली रेक्टेंगुलर पीस पर, तो हमने ये इस पर आर्मेचर की वाइंडिंग ले ली, तो इस पर आप आर्मेचर की वाइंडिंग ऐसे, ये रेक्टेंगुलर पीस है तो इसी से होती हुई आर्मेचर की वाइंडिंग ऐसे चलेगी और इसमें मैनी टर्न्स होंगे। इस पर आप इंसुलेटेड वायर के टर्न्स ले सकते हैं, बहुत सारे टर्न्स। और फिर इसके बाद इसी में अगर ये रोटेट करेगी तो यहाँ भी रोटेट करेगी, तो एक ये एक्सल हो गया, ये पूरा रोटेट करेगा। और इसी में जो इसका फ्री एंड है तो इसी पर स्प्लिट रिंग लगा दीजिए, उसी में वेल्ड कर दीजिए, तो वो क्या होगा, स्प्लिट रिंग के साथ इसी एक्सल पर रोटेट करेगी, एक्सल पर ये रोटेट करेगी एक्सल के साथ। तो अब जरा देखें, तो एक्सल पर जब इसका ऐसे रोटेशन होगा तो इसमें आप छोटे छोटे टरबाइन ऐसे लगा दें, ये जो चीज़ है आर्मेचर पर, तो इसमें इस तरीके से लगा दें। तो जब यहाँ से पानी लेगी और उठाएगी, क्योंकि ऐसे रोटेट करी तो उठा उठा कर ये पोटेंशियल ये ऊपर पानी को रेस कर सकती है, पंप का काम करेगी। अदरवाइज जब ये रोटेट करे तो मिक्सी की तरह यूज़ कर लो, इसके रोटेशन को आप ऑटोमोबाइल में यूज़ कर सकते हो, फैन में यूज़ कर सकते हो। वरना इसमें जो पानी ये लेगी यहाँ से कलेक्ट कर करके ये चढ़ाएगी और ऊपर पानी चढ़ता चला जाएगा, यहाँ पानी ऐसे चढ़ता चला जाएगा, फिर दूसरा कप आएगा, तीसरा कप आएगा, इस तरीके से ये मोटर काम करेगी, तो वाटर के चढ़ाने में भी काम आ जाएगी। So this is all about working of electric motor. Now there are some question asked on this. These are in-text questions. Now, power of electric motor कैन बी इंक्रीज्ड, इसकी पावर बढ़ाई जा सकती है, हम और पावरफुल मोटर ले सकते हैं, इंक्रीज्ड इफ वी रिप्लेस परमानेंट मैग्नेट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने जो एन और एस लिए थे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिप्लेस कर दो, तो वो और स्ट्रॉन्गर मैग्नेट हो जाएंगे, क्योंकि हम उसमें म्यू एन आई से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं। Replaced with, if we replace permanent magnet with electromagnet, important point है, permanent magnet with electromagnet। दूसरी चीज, if we increase the number of turns of armature by increasing number of turns of rectangular coil, तीसरी चीज प्लेसिंग या वाइंडिंग द रेक्टेंगुलर कॉइल्स ऑन आयरन कोर, वाइंडिंग क्योंकि उससे मीडियम बदल जाएगा और 1000 टाइम्स उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। वाइंडिंग द कॉइल ऑन आयरन कोर, इस तरीके से हम करके अपना मोटर की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। इट बिकम्स मोर पावरफुल, इट इनहेंसेस पावर ऑफ मोटर। मोटर की पावर हॉर्स पावर में ली जाती है। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। तो जितने हॉर्स पावर की मोटर होती है उसको आप वॉटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आप स्टेट कर लें। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर हमने लिखा दिया है कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर
को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट, सो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सो यही चीज़ आप लिख लेंगे जैसे हमने आपको पहले भी बताया है प्रिंसिपल। सो principle that when a rectangular coil is placed in magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously। आप ऐसे लिख दें, if rectangular coil is kept in magnetic field and current is fed through it, then it experience a couple, ये एक equal and opposite force experience करता है which rotates it। So this is the principle as we have mentioned। What is the role of split ring in electric motor? That also we have seen that split ring का क्या काम है? After every half turn it changes the polarity and reverses the direction of current so that motor continue to rotate in same direction and couple continue to act in same direction। So this is द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। जहाँ पर कम्यूटेटर लिखा है आप इसे स्प्लिट रिंग भी लिख सकते हैं। सो दिस इज फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।